everyone. My name is Nihal Gupta and I am going to say the prayer. So join your hands, bow your heads, close your eyes and get ready for the prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. For thine is the kingdom, the power and the glory, now and forever. Amen. Good morning. Thought of the day. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I repeat, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. Good morning. Today's news. Nearly 30% of the water produced by the water treatment plants of the Calcutta Municipal Corporation goes to waste. Yet the civic body has to bore deep tube well to meet the demand. The Celsius slide below 14 degrees in the city for the first time this season, riding strong northwesterly wind. Power looms owners in Nadia, Shantipur and Purulia will now manufacture clothes for school uniforms. Sports news. A number of Premier League clubs are pushing for a festival firebreak shutdown of football as they fight to COVID-19 crisis in top flight football. Weather report. Maximum temperature 17 degrees Celsius, minimum temperature 12 degrees Celsius. Thank you and have a nice day. Christians all over the world celebrate the birth of Jesus Christ. Some countries, however, have slightly different Christmas traditions, and as such festive season celebration takes place over a longer period of time, from the beginning of December to the beginning of January. More than 160 countries celebrate Christmas all over the world. Christmas traditions for many nations include the installation and lighting of Christmas trees, Christmas stockings, candy canes, and creation of nativity scenes depicting the birth of Jesus Christ. नमस्कार, मैं मायशा शेख कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप लोगों के समक्ष क्रिसमस के ऊपर कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं। ये हर वर्ष 25 दिसंबर को प्रभु ईसा के जन्मदिन के रूप में बनाया जाता है। यूरोप के देशों में इसे विशेष हर्ष तथा उल्लास के साथ मनाया जाता है। इटली के रोम नगर के पास वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु या पोप रहते हैं। वे अपने महल से संसार भर के ईसाइयों को इस दिन शांति तथा प्रेम का संदेश देते हैं। विश्व के अन्य देशों में भी क्रिसमस बहुत खुशी से मनाया जाता है। हमारे देश के ईसाई भी इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।